Okay friends, today we shall discuss on inverse proportion. Earlier I have released two videos on direct proportion. Those who have not watched these videos, I shall advise them to watch these videos and then come to this inverse proportion. Okay, now let us start inverse proportion. First of all, I shall discuss what is inverse proportion. Okay, now sometimes I have seen that स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया वेदर इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. क्यों? मैं बता रहा हूं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्लास में ये बताया था, इफ द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस देन द वैल्यू of y is also increases in the same rate. But in this case, in inverse proportion, what will happen? This is a direct proportion. Okay. Now, in inverse proportion, if the value of x increases, value y decreases at the same rate. So it is a case of inverse proportion. Clear? Now, I am going in detail what is inverse proportion. Okay? 3. Okay, dear friends. Suppose your father has given you rupees 6,000 rupees to purchase storybooks. This is a fixed amount, that is, it is a constant. Okay, so it is constant. You will not give. जितना भी रोना धोना कर लो, इससे ज़्यादा नहीं देंगे. So it is a fixed amount. Now you have gone to the market for purchasing books. Suppose you want to purchase Wimpy Kids. Okay, I am writing here price of each book, that is in rupees. You may say that this is x. Clear? Now, number of books purchased or can be purchased. Okay, suppose you have asked for the Wimpy Kids series, rupees 40 cost for each book. Then how many books can be purchased out of 6,000? It is fixed, so it is 150. Clear? Now you have asked for the अमर चित्रकथा. अमर चित्रकथा अगर कॉस्ट पड़ता है 50 रुपीज, तो कितने बुक्स परचेस करेंगे? 66,000 डिवाइड बाय 50 मींस 120. क्लियर? ये भी आपका पसंद नहीं आया और कोई बुक आपने परचेस करने के लिए बोले, तो suppose इसका cost per each book is 60, then what is the number you can purchase? It is 100. Okay, like this way, if it is 75, then it will be 80. Clear up to this? Now we forget this one. I'm saying, suppose you forget this one. Here you see that when the cost or price of each book increases, you see that number of books decreases. If it is 40, 150. If the cost is increased to 50, your number of books purchased is reduced to 120. Same case 60, 100, 75, 80. So if the value of x increases, value y decreases. So it is a clear case of inverse proportion. Students, आपको डरने की कोई बात नहीं. We apply your logic that whether a question is on direct proportion or inverse proportion. Now, the condition that's in the same case, मैंने पहले भी बताया था, direct proportion में condition बताया था. क्या बताए थे? x1 by y1 is equal to x2 by y2. In this case, you see one relationship. Let me write it. Here x. Okay, x1 y1 is equal to 40 into 150. 40 into 150 is equal to rupees. How much? 6,000. Similarly, x2 y2 is equal to 50 into 120 is equal to rupees 6,000. Okay, boss. x3 y3 is equal to 60 into 100 is equal to rupees 6,000. So we can say that x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 is equal to rupees how much? Rupees 6,000. That means a constant. Clear? This is the condition of an inverse proportion, that
x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 is a constant. Clear? Now, based on this concept, we can solve some problems. हाँ बच्चों, those who have not subscribed, I shall tell them to subscribe and press the bell so that you will get my next videos notification. My next classes will be on factorization. Okay? Okay friends, let us try to solve one problem on the inverse proportion. Read the question, first line. 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. इसका मीनिंग क्या है? 6 पाइप चाहिए एक टैंक को फिलअप करने के लिए. टाइम कितनी है? 1 घंटा 20 मिनट में ये टैंक पूरा हो जाएगा. क्लियर? ओके. अभी देखता हूँ सेकंड लाइन क्या बोल रहा है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितनी समय चाहिए इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड. नाउ मैंने पहले ही बताया था कि अब बताओ ये अपना लॉजिक लगाओ, ये कौन सी केस है, डायरेक्ट और इनवर्स. 6 पाइप जो है अगर लगाता हूं तो 1 घंटा 20 मिनट लगता है टू फिल अप द टैंक. एक पाइप कम कर दिया, पानी गिर रहा है, नेचुरली मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड. So x increases, y decreases. So it is a clear case of inverse proportion. Don't confuse. अपना लॉजिक लगाओ, सॉल्व करो. ठीक है? अभी देखिए, what I have to find out, how long will it take? How long, that is टाइम चाहिए, कितनी समय में ये फिलअप होगा. तो हम पहले क्या लिखेंगे? Let x minutes be the time required to fill the tank. Clear? Now I shall tabulate this information as follows. Okay friends, ये information हम tabulate करते हैं. ठीक है? What I have written first, number of pipes. Okay? अब देखिए कितनी पाइप्स है? हमने लिखा 6 पाइप्स. नीचे क्या लिखा है? टाइम इन मिनट्स. कितना टाइम है? 1 घंटा 20 मिनट. सो आई शैल राइट 1 आवर 20 मिनट्स. मैंने यहां पे क्या लिखा? मिनट्स. कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 20 मिनट मींस 80 मिनट. ओके. नाउ व्हाट आई हैव रिटन दैट x minutes be the time required. Time in minutes. So I have written here x. Clear? To fill up the tank. How long would you, only 5 pipes of the same type are used. So here what I shall, number of pipes is 5. So I shall write 5. Now apply the formula of inverse proportion. क्या बताया था कि x1 y1 is equal to x2 y2. Clear? I'm writing 6. Oh, before that, one thing, you have to give a statement to show the logic that it is a case of inverse proportion. What you will write? Lesser the number of pipes, more will be the time required to fill the tank. So it is a clear case of inverse proportion. I'm repeating once more. Lesser the number of pipes, more time will be required to fill the tank. So it is a clear case of inverse proportion. ये लाइन लिखने के बाद आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Therefore 6 by 80. Why therefore? क्योंकि आपने लॉजिक दिखा दिया कि ये case of inverse proportion. So inverse. So what is the x1 y1? What is the relationship? I have told only one. x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to a constant. Here x1 y1 x2 y2. So I shall write 6. Therefore 6 into 80 is equal to 5 into x. That is 5x. Okay? Clear? Therefore x is equal to how much? 6 into 80 divided by 5. If you reduce it, you will get 96 minutes. So I am writing here it is minutes. Convert into hour. What you will do? You have to divide by 60. If you divide by 60, it means hour. Okay. 60. How much is the remaining? 36.
तो 1 hour 36 minutes is the time required to fill the tank. Okay, this is your answer. Okay students, let us try to solve one more problem. मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब बटन को दबाए, फिर बेल को फिर दबाए, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. ओके फ्रेंड्स, ओके लेट अस स्टार्ट. There are 100 students in a hostel. Okay, एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स है. नेक्स्ट टाइम पढ़ो. फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days. मतलब खाने पीने की जो साधन है वो 20 दिन की है. कितने स्टूडेंट के लिए? 100 स्टूडेंट्स. ठीक है, क्लियर है. हाउ लॉन्ग दिस प्रोविजन लास्ट, कितनी दिन वो जाएंगे, प्रोविजन लास्ट करेंगे इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप. 25 मोर स्टूडेंट्स, 100 तो पहले से थे और 25 यहाँ पर टपक पड़े. आपको देखना है कि कितने दिन की वो खाने की प्रोविजन से. अब बताओ, लॉजिक लगाओ कि ये कौन सी केस है, डायरेक्ट और इनवर्स. क्या लॉजिक है? जब 100 स्टूडेंट्स था तो इसमें 20 दिन के खाने की साधन है. अगर 25 स्टूडेंट और इसमें ज्वाइन कर लिया तो सर्टेनली क्या है, it will reduce, number of days will reduce, so it is a case, clear case of inverse proportion. तो आप क्या लिखेंगे? First what I have to find how long these provisions last. हम क्या लिखेंगे? Let x be the number of days the provision lasts. The provision of food lasts. If 25 more students join. अगर एग्जाम हॉल में टाइम की कमियां है तो क्या लिखेंगे आप? लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज. टाइम कम हो गया तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे. लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज. यू कैन सेव टाइम. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग ऑल दिस थिंग्स. नाउ लेट अस tabulate this information in a table. Okay, what I have written, number of students, number of days. Clear? Now you see, what is the number of students in the first case? That is 100. Food provision lasts for how many days? Number of days is 20. What I have written here, let x be the number of days. Number of days x. Clear? What is the number of students? If 25 more students, don't forget it, don't write it 25. This will be how much? 100 plus 25. You read the question very carefully, otherwise you will do mistake. So it is 100 plus 25 means 125. Clear? You don't start the question, you have to show the logic that it is a case of inverse proportion. देखो क्या लिखना पड़ेगा एग्जाम हॉल में. More the number of students, lesser will be the number of days for food provision. Thus, it is a case of inverse proportion. Now, just write what 100 into 20 is equal to 125 into x. That means 100 into 20 is equal to 125x. You solve this. X is equal to, if you solve this, reduce it, it will be 16 days. Okay? डोंट स्टॉप हियर. अर्लियर मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे लिख के छोड़ना नहीं है, आधा मार्क बिल्कुल गवाओगे. क्या लिखोगे? द प्रोविजन इज लास्ट फॉर 16 days इफ 25 मोर स्टूडेंट्स विल ज्वाइन. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आई सपोज इनवर्स प्रोपोर्शन के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया. नाउ ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 13.2. क्लियर? आप खुद करेंगे. कोई कंफ्यूजन होगा हमें बताइएगा. मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, pradeep.@gmail.com. आप नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. इसका पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में आप उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको कंसेप्ट और क्लियर करवाऊंगा. ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक. ओके, थैंक्स.